Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda. We were doing writing and city life of your class 11th history and this is going to be part 2 of it. I hope you have watched part 1 since I have taught there many of the basic concepts regarding the Mesopotamian civilization, in fact regarding the urbanization, urban revolution and civilization, which will be very beneficial for you in understanding this chapter specifically. So let us begin with today's video. So first topic over here which we are going to deal is Mesopotamia and its geography. So first हम पहले बात करेंगे geography की और geographical features की, specifically Mesopotamia की. So Mesopotamia which lies in present day Iraq वाले region में आप देखो तो Mesopotamia का existence था and presently आप देखो this region is nowadays in Iraq. So Iraq is a land of diverse environments. Here you will find diverse environments वाला region है. Different geographical features आपको देखने को मिल जाएंगे in the different regions. So first of all we will talk about the northeast वाले region में if you see there lies green undulating plains. You have undulating plains, that means not the leveled plains नहीं है वहाँ पे, एकदम level वाले plains नहीं मिलेंगे, undulating है. And these undulating plains, they gradually rise to tree covered mountain ranges. Mountain ranges में rise हो जाते हैं, tree covered हैं, and there you will find clear streams on the mountains with wild flowers हैं, and with enough rainfall. So there is enough rainfall also on in this area, in the northeastern area, to grow crops. So here agriculture began between 7000 and 6000 BCE. So first in the Mesopotamia, जो आपका इस region में, northeast वाले region में, you will see that agriculture began first in this region. So if you look at the map, this is the fertile crescent wala region, and you will see that this is actually the northeast of Mesopotamia. And इसी region में आप देखो तो agriculture जो है initially start हुआ था, and Jarmo was there. Jarmo वाला region है, and in fact Zagros mountains जो है आपके ईरान वाले, उसके foothills में भी in fact Neolithic settlements were there initially, जो starting वाले थे. And then in the northern Mesopotamia also you will see there were successive Neolithic cultures जो आपके exist करते थे. Hasuna था, Samara culture was there, Halafian culture was there. So these culture existed in the northern Mesopotamian culture, and ये Neolithic settlements है. अभी we are not talking about the civilization वाला portion. We are only talking about the Neolithic settlements. With the people which were, they were growing crops. Now in the north, if we talk about the north, there is a stretch of upland वाला region है, mountain नहीं है. This is just upland, थोड़ा raised land है, and this area is called steppe, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. So this is a region where animal herding, it offered people a better livelihood than agriculture. तो यहाँ पे agriculture लोग नहीं practice कर रहे थे. They were better livelihood यहाँ पे लोगों को animal herding में मिल रहा था. And after the winter rains, so in the north region you will see there were winter rains. Sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. So after winter rains, you will see there will be green grasses that will be growing over there, and low shrubs also will be there, and goats and sheep they will be feeding on it. So north region में हमने ये देख लिया, upland region, steppe. In the northeast आपको पहले undulating plains देखने के लिए मिला, and then we saw the mountain ranges. Now to the east, tributaries of the Tigris provides routes of communication into the mountains of Iran. So if you look at this map, even if in this map, I know the map is not that much clear, but if you can just see my pointer, this is first river over here on your left hand side is the Euphrates, and then the river on your right hand side is Tigris, and this region is your Iran. आपके right hand side वाला जो region है वो ईरान है.
और ये टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज है, दैट मींस द रिवर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द ईरान साइड एंड जॉइनिंग द रिवर टिग्रिस, दे प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ कनेक्शन टू द ईरान वाले रीजन में, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे थे, एंड दैट इज हाउ रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है माउंटेन्स ऑफ ईरान में इन लोगों को मिल गए थे. And the south, you will see the southern region, it is a desert where the first cities and writing emerged. So it is a very एक तरीके से आप देखो, it is a very एक तरीके से सोचने वाली बात है कि the north eastern region where there was rainfall, and in fact the northern region where you will see the winter rainfall was occurring and in fact occurs even today. So both these regions, they did not have the emergence of first cities and the civilization. But on the other hand, the south, which was a desert, वहां पे आपको फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग का इमर्जेंस देखने को मिलता है, एंड वी विल सी हाउ. So this desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silt. So if you know something about the river, that rivers के courses होते हैं, upper course, middle course and the lower course. So lower course में जब river होती है, the movement of the river, the speed of the river is very slow, and because of its low speed, slow movement, the river is only able to carry very fine mud and silt with itself. And whereas when the river is in its upper course बहुत स्पीड में होती है, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि बड़े बड़े पत्थर, इनफैक्ट छोटे पत्थर सब अपने साथ लेके एक तरीके से इरोजन जो है बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी आपको रिवर की देखने को मिलती है इन इट्स अपर कोर्स. On the other hand, when the river is in its lower course, so you will see the depositional activity of its taking place. Depositional activity में भी आपको ये वाला जो एक्टिविटी है सॉइल फॉर्मेशन और सिल्ट जो है ये डिपॉजिट करती हुई नजर आएगी. डेल्टा फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, एंड इन फैक्ट इफ द फ्लडिंग इज देयर, फ्लडिंग में भी आपको ये जो सिल्ट है, मड है, ये डिपॉजिट कर देते हैं. एंड दिस इज वेरी फर्टाइल. जो आपकी सिल्ट है या फिर जो मड है, ये बहुत फर्टाइल होती है. So when they flood or when their water is let out onto the fields, fertile silt is deposited. So this is about the rivers. Okay. Now, after the Euphrates has entered the desert, its water flows out into a small channels. So Euphrates जब desert वाले region में enter करेगी, southern Mesopotamia में enter करती है, जो इसका जो पानी है, ये river जो है, ये small channels में एक तरीके से distribute हो जाएगी. एक तरीके से बहुत सारे चैनल्स इसमें से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड दीज चैनल्स देन दे विल फ्लड देयर बैंक्स. अब रिवर बैंक्स क्या होते हैं? द एरियाज व्हिच आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, दे आर नोन एज द रिवर बैंक्स. एंड व्हेनेवर वाटर इज वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी से रिवर के, तो उसमें से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है. बैंक्स वाले एरिया में आप देखोगे कि सिल्ट जो है, मड जो है, वो डिपॉजिट हो जाएगा, एंड देन द फ्लड इज ओवर, then the river will it will get back to its normal course. तो चैनल्स जब फ्लड होंगे तो इनका बैंक्स जो है, इनके बैंक्स वाले एरिया में आप देखोगे सिल्टेशन है वो डिपॉजिट हो जाएगी, सिल्ट का डिपॉजिशन हो जाएगा. एंड in the past you will see that these channels, they functioned as irrigation canals. Water could be let into the fields of wheat, barley, peas or lentils when necessary. So यहाँ से इन्हीं चैनल से वाटर को कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन के लिए ले जाया जाता था इन द फील्ड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, पीज और लेंटिल्स whenever it was required. Now, of all ancient system, if we look at all of the ancient system and even including that of the Roman Empire, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive. तो अगर हम सारे ancient system को compare करें रोमन एम्पायर के रोमन एम्पायर के एग्रीकल्चर को इंक्लूड करके, तो यू विल फाइंड जो सदर्न मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर था वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था. in even though it was carried out in a desert area and where the rainfall was not that much available and sufficient rainfall नहीं थी. इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि इरिगेशनल फैसिलिटीज भी उतनी ज्यादा आपको अवेलेबल नहीं होंगी, बट इवन दो दे समहाउ मैनेज्ड इट. Now, not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe
स्टेपे वाले रीजन में हम देखा कि अपलैंड वाला रीजन था, वहां पे sheep and goats they were grazing, and on the northeastern plains and the mountain slopes that we saw, that was when you too high for the rivers to flood and fertilize, because on the mountain ranges you cannot expect the rivers to flood because ये steep slope है, उसपे flooding नहीं हो सकती. So these animals they produced meat, milk and wool in abundance. So they were also producing something. They were also, of significant value apart from agriculture. Now further fish was also available in the rivers, and date palms they gave fruit in summer. तो date palms जो है आपके वो fruit आपके summer में देंगे. ठीक है, summer region में you will be getting fruits from there. Now, let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity. We do not need to make that mistake. हमें ये नहीं सोचना है कि जो cities हैं उनका emergence हुआ just because क्योंकि rural prosperity was there, because the rural prosperity was there, because the agriculture was very productive, because the milk, meat and the wool it was very much in abundance. ये हमें नहीं सोचना है. We shall discuss other factors by and by, but first let us be clear about city life. हम लोग सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, पहले हमें सिटी लाइफ को भी डिस्कस करना है उसके बाद. So let us talk about the significance of urbanism, and here I will tell you that I have also discussed some of the things which are given over here in my first lecture, and urbanization के बारे में मैंने डिस्कस किया है, अर्बन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सिविलाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स which are already जो आपकी जो चीजें हैं वो गॉर्डन चाइल्ड ने ये सारी चीजें बताई हैं, and he has basically talked about all this. So now again we are going to revise that again in according to NCERT. Cities and towns are not just places with large population. If you are to define cities and towns, you cannot merely define it with saying by saying that they are places with large population. So there is more to cities and towns, and they are not just places which contain large population. तो आप city और town को सिर्फ इस तरीके से नहीं define कर सकते कि वहां पे आपको large population मिलेगा. Now it is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. So towns में लोग कब जाएंगे, कब they will when they will go to the towns, and when they will एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जाके क्लस्टर करते हैं. Even if you look at the present times, why do the people go and they go to the towns and they go to go and settle there for most probably employment opportunities. आपके village वाले area में the only employment opportunity which is currently there is the food production, agricultural activities. So agricultural opportunities के अलावा जो opportunities present है वो आपको towns में मिलती है. Advantage है, advantages है people के लिए, लोगों के लिए to cluster in towns, because वहां की जो इकोनॉमी है उनको वहां पे डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज है other than the food production. So it is said that it is when an economy develops in other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. So in towns you will find that economy जो है diverse ways में develop करेगी, diversification होगा economic activities का, then only the people will go to the town and settle there. Otherwise अगर वहां पे भी आपको agricultural ही production करना है, then it will only be as same as your villages only. So urban economies comprise, besides food production, trade, manufacturing and manufacturers and services. So फूड प्रोडक्शन के अलावा अगर आप देखो तो ट्रेड होगा, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विसेज अलग अलग तरीके की मिलेगी. City people thus cease to be self-sufficient and depend on the products or services of other people. Now the city people, they will thus now become they will not be self-sufficient. तो अब कोई self-sufficient नहीं रहेगा, एक दूसरे पे dependent हो जाएंगे लोग, and एक दूसरे की services and products इनको चाहिए होगी.
चाहे वो सिटी के लोगों से एक तरीके से ले या फिर विलेज के लोगों से ले, बिकॉज इफ यू सी विलेज के लोगों से ये लोग एक्सचेंज करेंगे फूड प्रोडक्ट्स, and the village the people of the people those who will be living in the villages, they will be exchanging their food products for other services of other services that will be there in the city area. तो कुछ इस तरीके का आपको डिपेंडेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, एंड एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट जो एक तरीके से को एग्जिस्टेंस है दैट विल बी देयर, एंड exchange will be there between the different kinds of people, and hence no one will be self sufficient now, so everyone will have to depend on one another, and there is a continuous interaction among them, so interaction will be there. For instance, the carver of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टोन सील का कार्वर है, वो कार्व करता है स्टोन सील को, ठीक है, उसको सील पे स्टोन पे कार्व करने के लिए उसको ब्रॉन्ज टूल्स की जरूरत होगी, और वो टूल वो खुद नहीं बना सकता। एंड सेकेंडली जो स्टोन है, कलर्ड स्टोन है फॉर मेकिंग द सील्स, दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, तो उसको ये भी नहीं पता है कि वो कलर्ड स्टोन्स कहाँ से लेके आएगा, because his specialization is fine carving, not trading, because जो उसका specialization है वो carving है, trading नहीं है, he is not into that, वो trading नहीं कर रहा है, neither he is into making bronze tools, he only knows how to carve. तो ये एक तरीके से he is dependent on the tool makers for his bronze tools, and he is dependent on the traders for his stones. So the bronze tool maker does not himself go out to get the metals, copper and tin. Besides, he needs regular supplies of charcoal for fuel. अब देखो इसको फ्यूल भी चाहिए, चारकोल फ्यूल के लिए एक तरीके से फॉर मेकिंग दिस थिंग, एक तरीके से okay sorry we are talking now about the bronze tool maker. अब ब्रॉन्ज टूल मेकर जो है, जो टूल बना रहा है बेसिकली, तो वो खुद से बाहर नहीं जाएगा मेटल लाने के लिए, कॉपर एंड टिन, बिकॉज ये लोग भी कोई ट्रेड कर रहे होंगे, ट्रेड करके ही लाते होंगे कॉपर एंड टिन, देयर विल बी ट्रेडर्स हु विल बी ट्रेडिंग फॉर कॉपर एंड टिन, एंड बिसाइड्स आप जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है उसे स्मेल्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए होगा, चारकोल चाहिए होगा, so that he will be then able to heat the copper and tin and then उसको मिक्स कर सके और ब्रॉन्ज बना सके, तो उसके लिए फ्यूल भी उसको चाहिए होगा. नाउ हेंस डिविजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. तो अर्बन लाइफ का एक मार्क है वो आपका डिविजन ऑफ लेबर है. दैट मीन्स डिफरेंट पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्बन सिटीज, और आप बोल सकते हो कि सिटीज में, टाउन्स में ये चीज जो है ये होना बहुत जरूरी है. Otherwise, then you cannot call it a city, or you cannot call it again a civilization वाला जो stage होता है वो नहीं आप बोल सकते. Further, there must be a social organization in place. एक social organization भी होना चाहिए for urban city के लिए. Fuel, metal, various stones, wood, etc. come from many different places for city manufacturers. Now see that in a particular region सारी चीजें खुद से अवेलेबल नहीं होगी. वी नो दैट इवन एक वास्ट से वास्ट, बड़े से बड़े एरिया में आप देखते हो कि सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है. वी हैव टू इम्पोर्ट सर्टेन थिंग्स, एंड हर कंट्री को, इनफैक्ट इवन इफ यू लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो, हर कंट्री को कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. फॉर इंस्टेंस वी आर नाउ इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम दी दूसरी कंट्री से हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं फॉर आवर डोमेस्टिक यूजेस. सो आप देखो कि डिफरेंट प्लेसेस से आपको डिफरेंट रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी. दस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड. So there are deliveries of grain and other food items from the village to the cities, and food supplies need to be stored and distributed. So you will see कि grains and other food items जो है village से आता था, and it was delivered to the city, and food supplies then it was stored and then it was distributed
to the people of the city. Besides, you will see many different activities have to be coordinated. There must be not only stones but bronze tools and pots available for seal cutters. तो आप देखो कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट भी किया जाना, उनको कोऑर्डिनेट भी करना होता था. तो देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स, सिर्फ स्टोन्स नहीं बट ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट्स भी अवेलेबल होने चाहिए सील कटर्स के लिए. ऑब्वियसली इन सच सिस्टम some people give commands that others obey, and urban economies often require the keeping of written records. So you will see that in such a system, इस तरीके के सिस्टम में जहाँ पे आपको ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, and where you are where you require the storage system, and जहाँ पे आप इस तरीके से एक्टिविटीज आपको कोऑर्डिनेट करनी पड़ रही है, तो in such a system there you need some people to give commands and you need others to obey them. And urban economies, in urban economies you will see that written records maintain करने की भी आपको at a certain time जरूरत पड़ेगी. So this was another, that means you need use of writing. राइटिंग एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपकी अर्बन सेंटर्स में, टाउन्स में, सिटीज में होना चाहिए. So I have covered almost all of these points in my previous lecture. एक बार अगर आप उसको देखोगे, and in fact if you have already watched that, so this must be clearly आपको समझ में आ गया होगा. This must have been a very easy topic for you. So then the earliest cities in Mesopotamia, if you see, they date back to the Bronze age that is around 3000 BCE. अर्लीस्ट सिटीज की अगर हम बात करें तो वो डेट बैक करती है अराउंड 3000 BC. दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन द सिविलाइजेशन फेज ऑफ द मेसोपोटामिया बिगैन. इससे पहले आप देखो तो न्योलिथिक कल्चर्स वर देयर, है ना. तो आपके कल्चर थे एंड सिविलाइजेशन फेज भी अगर आप देखोगे तो इट वाज देयर इन इट बिगैन इन द साउथ में, सदर्न मेसोपोटामिया में ये स्टार्ट हुआ पहले आपका. Just a second. And southern Mesopotamia में you will see that Neolithic cultures were there. Al-Ubaid culture था, and Uruk culture was there, and Jamdat Nasr culture was there, and hence ये इन cultures के बाद you will see it culminated in the emergence of Sumerian सबके civilization. ब्रॉन्ज देखो तो इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है. यूजिंग ब्रॉन्ज मेट प्रोक्योरिंग दीज मेटल्स फ्रॉम ऑफन ग्रेट डिस्टेंसेस. तो ब्रॉन्ज को यूज करना मतलब कि ये दोनों मेटल्स को दूसरे एरिया से लेके आया जाता था. एंड कॉपर, इट इज सेड कि इट मस्ट बी, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज ब्रॉट फ्रॉम ओमान. Omani copper they were using. If you when you go in class 12th, there also you get a reference in your Harappan civilization chapter that Mesopotamian civilization, they were procuring copper from this Oman region. Using bronze meant procuring this we have done. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone seals, cutting shell for inlaid furniture, etc. सो मेटल टूल्स जो है आपकी इन सारे चीजों के लिए, इन सारे क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए ये इम्पोर्टेंट थे. एंड यू विल सी दैट मेसोपोटामियन वेपन्स जो थे दे वर आल्सो मेड ऑफ ब्रॉन्ज. सो आई थिंक दिस इज इनफ एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वंस अगेन.